Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to lecture 5 of Pharm 702. In previous video we had discussed the recombinant DNA technology. Today we will learn the transfer of recombinant DNA molecule to a cell, which is an essential step in the DNA technology. So let's start with the techniques, how the DNA can be transferred to the microorganisms or to the plant or animal cells. There are various techniques that are used to transfer the DNA to the microorganisms and to high-grade animals and plants. For DNA transfer in microorganisms, there are 4 techniques which are used: natural transformation, electroporation, phage as a mediator for transfer of recombinant DNA, conjugation. And for the transfer of DNA in plant or animal cells, there are again 4 techniques that are utilized, and they are electroporation, microsurgery, conjugation in plant cells, and DNA take-up by protoplasm, which is also called as a gun method. So different techniques हैं जो DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट या एनिमल सेल्स में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 4 टेक्निक्स हैं जिन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र DNA, जिनमें नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, फेज एक मीडिएटर का काम करता है ताकि वो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर सके बैक्टीरियल सेल के अंदर, और चौथा प्रोसेस कॉन्जुगेशन कहलाता है. जैसे DNA माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसी तरह से DNA प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. वो DNA मॉलिक्यूल जो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर DNA ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है. इसमें भी 4 टेक्निक्स यूज़ होती हैं. इन टेक्निक्स में इलेक्ट्रोपोरेशन की टेक्निक है, मोर और लेस ये सिमिलर होती है. जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू DNA ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह से प्लांट और एनिमल सेल्स में इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू DNA को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. सेकेंड टेक्निक माइक्रोसर्जरी कहलाती है. इसमें हम माइक्रो नीडल्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र DNA इनटू प्लांट और एनिमल सेल्स. थर्ड टेक्निक कॉन्जुगेशन की टेक्निक है प्लांट सेल्स में, और चौथी टेक्निक को हम गन मेथड कहते हैं, जिसमें प्रोटोप्लास्ट DNA को टेकअप करता है. So let's first discuss the DNA transfer techniques in microorganisms. The first technique that we are going to discuss today is called as natural transformation. Some bacterial cells, like those of the species Bacillus subtilis, which are frequently used in industrial biotechnology, are able to take up DNA under physiological conditions. This is described as natural transformation. कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं, लाइक जिस तरह से स्पीशीज़ हैं Bacillus subtilis की, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं स्पीशीज़, और इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये DNA को टेकअप कर सकती हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और इंटर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स हैं जिनके थ्रू DNA को ईज़िली टेकअप कर सकते हैं Bacillus subtilis स्पीशीज़, और इस प्रोसेस को हम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. The next process is called as electroporation, or it can also be termed as chemical transformation. In most cases, however, microbial cells have to be forced by an unusual regimen to take up DNA. For example, in the case of microorganisms, such non-physiological conditions are created by applying a heat shock to the host cells in the presence of high amounts of calcium ion. An alternative technique used to force DNA uptake is electroporation. For the purpose of DNA and cells are brought together in a cuvette, which is then subjected to vigorous electrical discharge. Under those artificial conditions, the cell envelope is forced to open itself, after which DNA may enter through the holes that are created. Those brute forces
In this technique kills a large fraction of the cells, but sufficient cells survive, among which are several that took up DNA. The technique of electroporation is widely applicable and frequently used. कुछ केसेस के अंदर माइक्रोबियल सेल्स में फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है ताकि माइक्रोबियल सेल डीएनए टेकअप कर सकें. दो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं इसमें, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रोपोरेशन. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, जिसमें हीट शॉक अप्लाई किया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. पोस्ट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट शॉक टेकअप करता है डीएनए को. कैल्शियम आयंस हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. हेयर यू कैन सी दैट केमिकली कॉम्पिटेंट सेल है, बैक्टीरियल सेल है. इंक्यूबेशन के थ्रू इसमें डीएनए इंसर्ट करना है. हीट शॉक अप्लाई किया जाता है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस till 30 seconds, and high amount of calcium is present in this stage. पोर्स फॉर्म होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, और जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जिसे ट्रांसफ़र करना है वो ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू दिस पोर्स, थ्रू दीज पोर्स. देयर इज़ अनदर टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स अप्लाई किए जाते हैं. इलेक्ट्रिक शॉक्स भी वही काम करते हैं जो हीट शॉक कर रहा है कि ये पोर्स बनाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इन पोर्स के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर. लेकिन इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक है कि क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों सूरतों में, हीट शॉक की सूरत में भी और इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में भी, तो एक ड्रॉबैक ये एग्जिस्ट करता है कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सेल्स किल होते हैं. लेकिन स्टिल कुछ सेल्स सर्वाइव करते हैं या सफिशेंट अमाउंट ऑफ सेल्स सर्वाइव करते हैं जिनमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है. इस टेक्निक को वाइडली यूज़ किया जाता है एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड. The next technique is a technique where phage as a mediator plays a role to transfer the recombinant DNA. Next to direct transfer of recombinant DNA molecules as such, there is at least for transfer to bacterial cells the possibility to package DNA in a bacteriophage capsid and then to mimic the normal bacteriophage infection procedure. रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ट्रांसफ़र, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियोफेज में पैकेज किया जाता है एंड देन बैक्टीरियोफेज का जो इन्फेक्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू बैक्टीरियोफेज डीएनए ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर. यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि फेज कैप्सिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए हार्बर है एंड दिस एड्जॉर्ब टू द बैक्टीरियल होस्ट सेल. फेज एड्जॉर्प्शन करता है टू द बैक्टीरियल होस्ट सेल, और एड्जॉर्प्शन के बाद इट रिलीज सर्टन केमिकल्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर्स क्रिएट करते हैं, और उन पोर्स में से बैक्टीरियोफेज या फेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल में एंड दिस इज़ प्रोपगेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल. द बैक्टीरियल सेल्स रेप्लिकेट एंड द प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स टुक प्लेस. The other technique that is used to transfer DNA into bacterial cell is called as conjugation. Transfer to bacterial cells can also be achieved by making use of conjugation. Conjugation is a process where DNA transfer takes place by cell-cell meeting. For conjugation, a special class of plasmid is required and that class is called as conjugative plasmid. If a cell with such a plasmid meets the donor and it meets a cell with such plasmid, the recipient they may form together is called cell aggregate. If the so-called mating aggregate, the plasmid from the donor has the ability to transfer itself as a consequence of a conjugative replication process according to the rolling circle model to the recipient cell. By manipulating the conjugative plasmid, and one may create donors harboring recombinant DNA molecules which can then rather efficiently be transferred by cell-cell contact.
Here you can see that there are two plasmids which are called as conjugative plasmids. One is called a donor cell containing the F plasmid, and it is capable to mate with the recipient cell. When it mates, the plasmid transfers its DNA into the other cell. Plasmid is activated for transfer when endonucleases cleaves one strand of DNA at the origin transfer, and this retracts pulls the donor and recipient cell together. The F plasmid is transferred as a single stranded DNA molecule. Here you can see that this rolling circle model is taking place. The complementary strands to both F plasmid strands are synthesized in the donor and recipient cells. Both cells are F positive and synthesize the S pilus. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो दो तरह के प्लाज्मिड्स हैं. एक प्लाज्मिड जो दो तरह के सेल्स हैं जिनमें एक सेल के अंदर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एडेड है. ये सेल एक सेल डोनर सेल है और दूसरा सेल रेसिपिएंट सेल है. सेल सेल मेटिंग के थ्रू दे टू कंबाइन. जो प्लाज्मिड कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है वो रोलिंग सर्कल मॉडल के थ्रू लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ये रेप्लिकेशन करता है और एक डॉटर प्लाज्मिड फॉर्म करता है जिसे रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. वो DNA ऑफ इंटरेस्ट जो इस प्लाज्मिड में या कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में एडेड है वो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. DNA transfer can be done in eukaryotic cells as well. DNA transfer can be done in eukaryotic cells as well. Let's learn the techniques to transfer DNA in plants and animal cells. The first technique that is used to transfer DNA in plants and animal cells is electroporation. It is more or less similar to the technique that was used to transfer DNA in microorganisms. If an animal virus or a plant virus is used as a vector for the recombinant DNA technology, one may exploit natural virus infection processes to transfer DNA to an animal or plant cell. Like the case in microorganisms, DNA transfer to animal cells can be forced by treatment with high amount of calcium ions or by another chemical treatments or by providing heat shocks. एनिमल वायरसेस या प्लांट वायरसेस जब वेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर तो नेचुरल वायरस इन्फेक्शन प्रोसेसेस को यूज़ करके डीएनए को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एनिमल या प्लांट सेल के अंदर. जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ट्रांसफ़र होता है इसी तरह से एनिमल सेल्स के अंदर भी डीएनए ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय हीट शॉक्स और बाय द ट्रीटमेंट विद हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम या फिर कुछ और chemical reactions के through. In this diagram, the DNA transfer is shown where the culture cells are mixed with the DNA in a special cuvette, and then a high voltage is applied that provides electroporation or that actually leads to the opening of the pores in the plant cells. The cells take up the DNA in holes through holes in the membrane, and then the DNA enters the nucleus in plant or animal cells. Another technique which is used to transfer DNA into plant cells is called as microsurgery. It is possible to inject DNA with a syringe into the nucleus of the cell. The later technique one could speak of kind of microsurgery is feasible due to the relative large dimensions of the animal cells compared to bacteria and is also applied to plant cells. The cell is brought on the tip of a thin glass tube and is fixed to the tube by the suction at the other end of the tube. By means of micromanipulator, a small syringe filled with DNA is directed to the nucleus of the fixed cell, and then the DNA is injected into the nucleus.
डीएनए को इंजेक्ट करना सिरिंज के थ्रू पॉसिबल है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में, बिकॉज इस टेक्निक को हम माइक्रो सर्जरी कहते हैं, और ये इसलिए फिजिबल है कि एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स लार्जर इन साइज़ होते हैं और इनकी डायमेंशंस लार्जर होती हैं। इसी वजह से फिजिबली इस टेक्निक को अप्लाई किया जा सकता है यूजिंग माइक्रो सिरिंजेस। इस टेक्निक के अंदर सेल को थिन ग्लास की टिप के ऊपर लेकर आया जाता है, और ये टिप थिन ग्लास एक्चुअली फिक्स्ड होता है टू द सक्शन ट्यूब. Here you can see it is fixed with the suction pipette at the other end of the tube. माइक्रो मैनिपुलेटर के थ्रू एक स्मॉल सिरिंज फिल की जाती है डीएनए से, और इस डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस. This is a fertilized cell. These are pronuclei. Injection pipette containing between 50 and 200 gene copies can be injected into this nucleus. A very successful way to transfer DNA into plant system is based on a special type of conjugation. The soil bacterium called Agrobacterium tumefaciens harbors a conjugative plasmid called Ti plasmid or tumor-inducing plasmid. If such a bacterium infects wounded tissues of certain plants, part of the Ti plasmid or tumor-inducing plasmid is transferred to a plant cell. If such a bacterium infects wounded tissues of certain plants, part of the tumor-inducing plasmid is transferred to a plant cell in a conjugation-like process. This transfer is followed by integration of the transferred DNA into the genome of the plant. The infected plant cell loses normal growth control and develops a tumor, a plant disease called crown gall. By manipulating the tumor-inducing plasmid such that its tumor-inducing properties are lost and foreign DNA fragments are linked to it, any DNA can be transferred in a convenient way from the modified agrobacterium donor to a plant cell. एक सक्सेसफुल वे है डीएनए को ट्रांसफ़र करने का प्लांट सिस्टम में, जो कि कॉन्जुगेशन के ऊपर बेस करता है. इसके अंदर सॉइल बैक्टीरियम यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसे हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस कहते हैं. इस बैक्टीरियम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या कॉन्जुगेटिव ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. अगर इसी बैक्टीरियम में को यूज़ किया जाए फॉर इन्फेक्शन इन प्लांट्स जिसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो ये प्लांट्स के अंदर एक कॉन्जुगेशन लाइक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. ये ट्रांसफ़र एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड का प्लांट्स में इंटीग्रेट करता है डीएनए ट्रांसफ़र इनटू द जीनोम ऑफ द प्लांट, और इन्फेक्टेड प्लांट नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल लूज़ कर देता है और एक ट्यूमर डेवलप करता है. इस ट्यूमर को हम प्लांट डिजीज़ कहते हैं, जिसे क्राउन गॉल कहा जाता है. अगर मैनिपुलेशन कर दी जाए इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के टीआई प्लाज्मिड में, जिसमें से ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को निकाल दिया जाए और फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के अंदर लिंक कर दिया जाए, तो ये डीएनए इजीली या कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र हो सकता है बाय मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम डोनर टू प्लांट सेल. The next method is called as gun method. Since the wall of the plant cell is the main barrier for uptake of DNA, one has exploited protoplasts of plant cells, that is plant cells lacking cell walls, to introduce DNA. Protoplasts can take up DNA quite easily. It is feasible to regenerate from genetically modified protoplasts intact plant cells. Finally, a very artificial method to introduce DNA in plant tissues has been developed. Microprojectiles covered with DNA are shot with a gun into the plant cells. In fact, many plant species that cannot readily be genetically modified with any of the methods mentioned
previously can be modified using this rather bizarre gun method. This device injects cells with genetic information using a high metal element bullet coated with plasmid DNA. प्लांट सेल्स में सेल वॉल एक मेजर बैरियर होती है डीएनए की अपटेक में. इसी वजह से प्रोटोप्लास्ट जो ऐसे प्लांट सेल्स हैं जो सेल वॉल लैक करते हैं उनको यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस डीएनए. प्रोटोप्लास्ट ईज़िली डीएनए को अपटेक कर सकते हैं और ये फीजिबल होता है कि रीजनरेशन हो सके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट की इंटैक्ट प्लांट सेल्स के अंदर. एक आर्टिफिशियल मेथड है डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का प्लांट टिश्यूज़ में, जिसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स यूज़ की जाती हैं. ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स डीएनए के साथ कवर्ड होती हैं और इन्हें गन्स के थ्रू शॉट किया जाता है प्लांट सेल्स में. बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हो सकती किसी भी मेथड से, जिन्हें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. उनमें ये जो गन मेथड है इन्हें यूटिलाइज़ किया जा सकता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर ये गन है जिसे यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअली इंजेक्ट करती है सेल्स विद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसमें हाई मेटल बुलेट्स होती हैं कोटेड विद प्लाज्मिड डीएनए. So the various techniques that are used to transfer DNA are generally not very efficient and may cause extensive killing of cells. Moreover, the fate of the transferred DNA is not always predictable. For example, in some cases, the introduced DNA is subject to nuclease-mediated breakdown, while in animal or plant cells, the introduced DNA does not always reach the nucleus, nor is it always integrated in a proper way. All the methods to transfer DNA yield only a few cells that are vital and stable. Therefore, selection techniques are highly desirable to find these rare cells. Different techniques इसमें डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है वो जनरली एफिशिएंट नहीं होती और एक्सटेंसिव किलिंग करती हैं सेल्स की जिनमें डीएनए ट्रांसफ़र किया जा रहा है. इसके अलावा जो ट्रांसफ़र डीएनए है उसका फेट प्रिडिक्टेबल नहीं होता. सर्टेन केसेस में जहाँ पर डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेल्स के अंदर, वहाँ पर न्यूक्लियस मीडिएटेड ब्रेकडाउन हो जाता है डीएनए का. जबकि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जहाँ डीएनए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो डीएनए हर बार न्यूक्लियस तक नहीं पहुँचता और हर बार प्रॉपर वे में इंटीग्रेट नहीं होता. सो जितने भी मेथड्स हैं ट्रांसफ़र करने के डीएनए को वो बहुत कम अमाउंट के अंदर ऐसे सेल यील्ड करते हैं जो कि वाइटल और स्टेबल होते हैं. इसी वजह से सिलेक्शन टेक्निक्स हाईली डिज़ायरेबल हैं टू फाइंड दीज रेयर सेल्स विच आर वाइटल एंड विच आर स्टेबल. Most selection techniques use a marker on the vector that codes for a selective property. Markers which code for a resistance towards a specific antibiotic substance are frequently used. If the cell that has to be modified is sensitive towards that antibiotic, the few modified cells from the transfer trial can easily be selected by bringing samples of the treated cells, either microbial cells, plant cells, or animal cells, in a medium containing the relevant antibiotic. Only the cells that took up DNA and do maintain that DNA in their progeny will proliferate. All other cells are killed or at least do not grow. An alternative selection method uses recipient cells with specific growth deficiencies. बहुत सारी सिलेक्शन टेक्निक्स ऐसी हैं जो मार्कर्स यूज़ करती हैं वेक्टर्स में जो एक्चुअली सिलेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए कोड करते हैं. मार्कर्स जो रेजिस्टेंस कोड करते हैं टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स उन्हें यूज़ किया जाता है मोस्टली इन डीएनए ट्रांसफ़र. अगर एक ऐसा सेल है जिसे मॉडिफाई किया जा रहा है
डीएनए ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन वो सेंसिटिव है टूवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक। तो जो फ्यू मॉडिफाइड सेल्स हैं फ्रॉम द ट्रांसफ़र ट्रायल, उनको ईजीली सेलेक्ट किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग दैट सैम्पल ऑफ द ट्रीटेड सेल्स, चाहे वो माइक्रोबियल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, एक ऐसे मीडियम के पास जिनमें रेलेवेंट एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। सो सिर्फ वो सेल्स जो कि उस डीएनए को टेकअप करेंगे और डीएनए को मेंटेन करेंगे, जो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे। बाकी तमाम सेल्स जिनमें डीएनए मौजूद नहीं होगा, वो किल हो जाएंगे या फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन मेथड है जिसमें हम रेसिपिएंट सेल्स ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें स्पेसिफिक ग्रोथ डेफिशिएंसीज प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉन्स्ट्रक्ट है जिसमें मार्कर जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और डिज़ायर्ड जीन है। इसे जब ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ग्रो किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो वो सेल्स सर्वाइव करते हैं जो एक्चुअली ये मार्कर जीन रखते हैं, और जो रेजिस्टेंट है टू द एंटीबायोटिक सेल्स विदाउट द डिजायर्ड जीन आर किल्ड बाय एंटीबायोटिक। So that's all from today. Steve Jobs once said, and I quote, "I think the biggest innovation of the 21st century will be at the intersection of biology and technology. A new era is beginning." In next video, we will be learning about the DNA sources. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.